Now, after a local police station filed the first FIR in the Red Fort blast case, Delhi Police Special Cell has also registered a separate FIR invoking charges of criminal conspiracy. The anti-terror unit has now taken over key parts of the investigation with its own case. The move comes as exclusive CCTV footage from the underground Red Fort metro captures the intensity of the blast of the explosion, and with the special cell opening its own probe, investigators are now focusing on the larger plot behind the entire attack. Behind this attack that killed 13 people in the national capital, and the investigating agencies are searching for small items like detonators, electric wires at the blast site for the last 5 days. And this is the CCTV footage that we have accessed from the underground metro station, where you can see passengers who had arrived for their daily commute were visibly shaken, and there you can see even the camera there was seen shaking, and that's the intensity of the explosion that rocked the national capital. And investigators say the blast involved high-grade explosives, and that's the aftershock that was felt underground metro station. And this is the CCTV footage that we have accessed. The agencies suspect that terrorist Dr. Umar had prepared a high-intensity bomb inside the car stationed in the parking lot with the intention to cause maximum damage, maximum casualty. And according to sources, neither the timer nor any traces of the detonator have been found yet. However, some samples found at the spot point towards the presence of ammonium nitrate. And if ammonium nitrate and the chemical oil in it are kept in a closed vehicle, the heat then automatically increases, resulting in immense pressure, leading to the explosion that claimed 13 lives in the national capital. Along with those 15 individuals who are now missing and were in direct contact with Dr. Umar, more and more CCTV clippings are surfacing. This one is from the underground metro station at the Red Fort, and there you can see passengers and the person in charge at the metro station was visibly shaken. And this is one of the food counters where you can see how the aftershock of the explosion triggered panic at that underground metro station. And this is one of the many CCTV footages that have surfaced in the aftermath of this deadly explosion at the Red Fort, outside the Red Fort, at a signal light just near the metro station. And the intention of Dr. Umar was to cause high damage, incur more casualties, and to also spread panic and terror in the national capital. Now, so far, the big revelations in the blast are that Dr. Umar was an expert in making bombs, and a couple of tons of explosive materials have also been seized. Detonating material was used for the explosion. That's what the security agencies have suspected. Thin wires were found by the forensic team at the blast spot. And along with that, ammonium nitrate, petroleum oil detonating materials were also used in the explosives. This is the big revelations that we are tracking for you from the Delhi terror attack case. Over 2 kg ammonium nitrate was used. That's the latest breaking news that we are tracking, and we're tracking every single angle of this particular breaking news. Forensic teams have also uncovered crucial evidence. Remember, viewers, it's been 6 days. Today is the 6th day since the blast happened in the national capital, right outside the Red Fort, which at least claimed 13 lives and left dozens of others injured. And the probe continues to widen. It's a multi-state probe that we're looking at from Haryana, Delhi, and now Jammu and Kashmir as well. More and more suspected individuals are being detained. And moving on to more breaking news, there are big revelations in the Delhi blast investigation. Forensic teams have uncovered crucial evidence, and sources say Dr. Umar Mohammed was an expert bomb maker. Investigators have found 60% of the exhibits from the Hyundai i20, and the material clearly points to Umar's hand. And according to top sources, a timer device was also used to trigger the blast. The forensic teams have recovered thin wires from the spot. The explosive was allegedly prepared using fuel oil, a detonator, and a timer, combined with ammonium nitrate, mixed with fuel oil and transformer oil as well.
From the 48 samples examined so far, experts believe Umar used a 3mm or a 9mm battery with a timing circuit attached to a thin wire, and sources say such bombs require a simple circuit and a manual switch, a switch that can be turned on and off just like a normal household button. And forensic teams suspect Umar likely used this very method to trigger the deadly blast. And what's more is the fact that assembling such a device takes barely 5 to 10 minutes, and the detonators used in such bombs can be easily procured from the coal mines. Now the big questions for the agencies are: where exactly did Dr. Umar Mohammed assemble this high-intensity explosive? Did he connect the wiring, the timer and the detonator using those 3 hours inside the Red Fort parking lot? Or did he arrive in Delhi with the switch already in his hand, the device fully prepared before entering the national capital, the most highly populated part of Delhi? And investigators are working to trace every single step that led to the explosion. भारतवर्ष ने आपको बताया था कि आखिरकार किस तरीके से इस पूरे धमाके को अंजाम दिया, और जो धमाके का इम्पैक्ट था वो आसमान में ज़्यादा था, ज़मीन पर कम। अमूमन आपने देखा होगा कि ब्लास्ट के तुरंत बाद ज़मीन के अंदर गड्ढा होता था, लेकिन हमने पहले ही बताया था TV9 भारतवर्ष ने कि इस ब्लास्ट में ज़मीन के अंदर या ज़मीन पर कोई भी गड्ढा देखने को नहीं मिला है, तो लिहाजा तस्दीक उस बात की हम करते हैं। ये देखिए, आज रास्ता खोल दिया गया है, और जो ब्लास्ट की जगह थी जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ था, उस जगह हम आपको ये देखिए दिखा रहे हैं, ठीक इसी जगह ये ब्लास्ट हुआ था। लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी गड्ढा सड़क पर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो विस्फोटक था वो कार की डिक्की के अंदर रखा गया था। तो जो इम्पैक्ट था वो आसमान में ऊपर की तरफ और आसपास की तरफ 360 डिग्री की पर ज़्यादा था। तो ऐसे में ज़मीन पर गड्ढा नहीं हुआ, लेकिन धमाके की जो इंटेंसिटी थी वो इतनी तेज़ थी कि तकरीबन 40 फीट नीचे जो मेट्रो स्टेशन है लाल किले का, वहाँ तक कंपन महसूस किया गया, धमाके की आवाज़ वो महसूस की गई, और यहाँ पर आसमान में तकरीबन 2 किलोमीटर तक वो पूरा एहसास किया गया। ना सिर्फ कंपन बल्कि आवाज़ यहाँ पर महसूस की गई थी। तो तस्वीर आप देखिए, आज ये पूरा रास्ता खोल दिया गया है और ज़मीन में आपको यहाँ कोई गड्ढा नहीं दिखाई देगा, लेकिन ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो आपको इस धमाके के इम्पैक्ट साफ तौर पर दिखाई देंगे। देखिए, बैनर पूरी तरीके से फट चुका है। ठीक सामने ये देखिए, ये लाल किला पुलिस चौकी की विंडो है। ये टेम्परेरी रूम्स यहाँ पर लाल किला पुलिस चौकी में बनाए गए हैं। देखिए, रूम पूरे तरीके से विंडो यहाँ पर उखड़ी हुई आपको दिखाई देगी, ये डैमेज आपको दिखाई देगी। ठीक इसी तरीके से ये पेड़, ये देखिए पीपल का, यहाँ भी आपको इम्पैक्ट साफ तौर पर दिखाई देगा। देखिए, जो टुकड़े हैं वो आपको पेड़ के ऊपर लटके हुए साफ तौर पर दिखाई देंगे सामान के। आप भी यहीं के रहने वाले? ओके, ये देखिए, आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर धमाके के बाद इम्पैक्ट जो था वो काफ़ी बड़ा था, और लिहाजा इस धमाके में तकरीबन 9 से 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 25 के करीब लोग पूरे तरीके से घायल हुए, जिनका अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन अब धमाके के 3 दिन बाद जो स्थिति है, अब वो पूरे तरीके से सामान्य होती हुई दिखाई दे रही है। रास्ते को अब खोल दिया गया है। जो तमाम सुराग और सबूत थे, फोरेंसिक टीम ने वो यहाँ से उठा लिए हैं। तकरीबन 40 से ज़्यादा एग्जिबिट हैं इस I-20 कार से जुड़े, जो इकट्ठा किए गए हैं, और जो उसके ऊपर जो भी ट्रेसिस थे विस्फोटक के, वो भी सैंपल फिलहाल फोरेंसिक टीम के द्वारा उठा लिए गए हैं, जिसको लेकर अब आगे की तफ्तीश जांच एजेंसियों के द्वारा की जा रही है। Meanwhile, viewers, the road near the blast spot in Old Delhi's Red Fort area, which had remained closed since Monday when the blast happened, has reopened for the public. But here's a ground report that was recorded just a few moments before it was reopened for public use. 6 दिन पहले यानी सोमवार की शाम तकरीबन 6:52 पर दिल्ली के लाल किला के सामने जबरदस्त ब्लास्ट हुआ था, और तभी से जांच एजेंसियां इस ब्लास्ट के सुरागों का सिरा पकड़कर पूरे आतंकी नेटवर्क को खंगालने की कोशिश कर रही है। आज 6 दिन हो चुके हैं जब लाल किला के सामने ये जो पूरा रास्ता है या पूरी तरीके से ब्लॉक है। NIA, NSG, स्पेशल सेल और दिल्ली की तमाम जो दूसरी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार जांच कर रही हैं। 6 दिन से ये रास्ता बंद है, आसपास की दुकानें, मार्केट बंद है।
लेकिन आज यहाँ पर साफ सफाई की जा रही है। जिस जगह आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर सोमवार की शाम लगभग 6:52 बजे के बाद से काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ थी, ब्लास्ट हुई, आग लगी हुई थी और जो गाड़ियों के पार्ट्स थे वो दूर तक बिखरे हुए थे, जिनको लेकर के फॉरेंसिक की टीम और तमाम एजेंसीज लगातार जांच कर रही थी। और यही वजह है कि पूरे एरिया को फिलहाल बंद कर दिया गया था, किसी की भी आवाजाही यहाँ पर नहीं थी। लेकिन आज सुबह से इस पूरे एरिया की साफ सफाई की जा रही है, धुलाई की जा रही है। अब उम्मीद की जा रही है कि अब शनिवार की शाम तक इस रोड को खोल दिया जाएगा ताकि लोग आ जा सके। फिलहाल जांच एजेंसियां लगातार अपनी जांच कर रही हैं। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में दिल्ली की स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट ने भी एक FIR दर्ज की है। दरअसल जो हापुड़ से डॉक्टर गिरफ्तार किया गया है, उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जांच की और उसके बाद आपराधिक षड्यंत्र रचने के तहत इस पूरे मामले में एक नई FIR दर्ज की गई है। दूसरी तरफ लाल किला ब्लास्ट की जांच कर रही एजेंसियों को शक है कि लाल किला की पार्किंग में जब डॉक्टर उमर 3 घंटे तक बैठा हुआ था, गाड़ी पार्क करके उसके अंदर बैठा हुआ था, तो क्या बम को वहीं उसी गाड़ी के अंदर उस 3 घंटे के अंदर बनाया गया? क्योंकि किसी भी तरीके का भी डेटोनेटर या दूसरी चीजें पुलिस को कोई वायर नहीं मिला और इसी वायरों की तलाश लगातार पुलिस कर रही है। लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि कोई टाइमर या डेटोनेटर जरूर होना चाहिए जिससे कि ब्लास्ट किया गया। फिलहाल पुलिस ये भी जांच कर रही है कि जब 3 घंटे तक उमर गाड़ी के अंदर पार्किंग में बैठा हुआ था तो क्या कुछ और लोग भी वहां पर मौजूद थे जो उसकी मदद कर रहे थे? क्या कोई उमर से वहां पर मिला था और बाकी बम को वहीं पर तैयार किया गया? क्योंकि एक CCTV में साफ नजर आ रहा है, जब उमर दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी दौड़ा रहा था तो उसमें एक बैग रखा हुआ नजर आ रहा था। तो आशंका ये भी जता रही जा रही है कि उस बैग के अंदर हो सकता है कि विस्फोटक रखे हों, जिसको कि 3 घंटे तक गाड़ी के अंदर लाल किला की पार्किंग में पहले तैयार किया गया और उसके बाद पार्किंग से निकालते ही गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस और एजेंसीज इस पूरे मामले में जांच कर रही है, लेकिन 300 किलो और अमोनियम नाइट्रेट कहीं पर छुपाया गया हो सकता है और उस अमोनियम नाइट्रेट की भी पुलिस तलाश कर रही है। Meanwhile, in Faridabad, the police is conducting a search operation in different colonies and villages. A search operation was also conducted by Faridabad police in Gandhi colony, and during the search operation, a large number of police force was also present and people were interrogated. Landlords have been asked not to keep tenants without checking their backgrounds because it becomes a very, very crucial information for them as to who these individuals are, where are these tenants from. So suspected individuals must be reported to the police. That's what the Faridabad police have instructed all the landlords, and the operation intensified earlier today when Faridabad police conducted an extensive search in Gandhi colony, deploying a significant force presence on the ground. Officers moved door to door, speaking with residents, checking documents and conducting rapid